तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, सेट चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा 11th क्लास का मैथमेटिक्स का। तो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि सेट क्या होता है। सेट को लिखने के क्या कितने हाउ मेनी वेज आर देयर टू राइट द सेट, राइट? दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन, राइट? तो चलिए सेकंड सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। In the second question, let A equal to 1, 2, 3, 4, एक सेट गिवन आपको सेट A 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसके मेंबर्स हैं। Insert the appropriate symbols epsilon और epsilon not the blank spaces, right? तो यहाँ पे इसमें या तो एप्सिलॉन का साइन लगेगा, दैट इज किसका साइन होता है, बिलोंग्स का, और या फिर डज नॉट बिलोंग्स का साइन लगेगा, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये देखो यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, 5 क्या इस सेट का मेंबर है? बिल्कुल है। तो क्या साइन लगेगा? एप्सिलॉन का। क्या 8 is the member of set A or not? Because 8 doesn't belongs to this set A, so we write the sign for doesn't belong, right? Similarly, question number third, then fourth, then fifth, then sixth. Okay, so all the questions are easy, right? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट? हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। चलिए दूसरे पेन का हम इस्तेमाल करते हैं आज, राइट? ब्लू पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, एक सेट गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है आपको। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, x such that x is an integer, right? And x is in between -3 to 7. Okay, what you can student? तो ये सेट ए गिवन है जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। जैसे कि आपको पता है, सेट जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें क्या करते हैं, हम सभी मेंबर्स लिखते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन क्या है कि x इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि x शुड बी लेस देन 7 बट नॉट लेस देन -3। ओके, सो वी कैन राइट -3, -2, -1, then 0, then 1, then 2, then 3, 4, 5, 6 and 7. So these are the how many members? That is 11 members of this set A. So what is roster form? Everybody knows it. That each of the members is enclosed in a curly bracket, and these members are separated by commas. Okay. The second part, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो सेट बी आएगा आपका, नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों 6 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इट इज लेस देन 6। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड मीन्स थर्ड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट? देखो, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। सेट सी लिखना है आपने, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड यू हैव टू राइट ऑल द मेंबर्स दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। क्या दो कंडीशन है? एक तो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट? 10 से स्टार्ट होते हैं। कहां पे खत्म होते हैं? 99 पे। लेकिन वही मेंबर्स चाहिए जिनके डिजिट का सम कितना हो? 8 हो। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1, 7, 17, then 2, 6, 26, then 35, then
44, then 53, then 62, then 71. Okay. So these are the numbers. These are the two-digit numbers which satisfy the condition that sum of the digit is 8. You can check 1 plus 7 is 8, 2 plus 6 is 8, 3 plus 5 is 8, and so on. Okay, student. चलिए next question. I mean next part, fourth part. What is given? D. X is a prime number which is divisor of 60. देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है. कई बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता होता है. ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर बच्चों? It is a number having only two factors, or you can say which is divisible by itself and one more number. Okay, that is one. So prime number is a number which is which can be completely divisible by itself and one, or we can say prime number is a number having only or exactly, you can say exactly two factors. Okay. For example, what are the factors of 3? That is 1 and 3. So it is a prime number. What is the prime factor of what is the factor of 5? That is 1 and 5. So 5 is also a prime number. But what about 4? 4 is divisible by 1, divisible by 2, divisible by 4. So it has three factors. So it is not a prime number. If it is not prime number, it must be composite number. Okay. What about 1? 1 is divisible by only by 1. That is, it has only one factor. So 1 is neither prime number nor composite number. ठीक है स्टूडेंट? तो सेट चैप्टर करने से पहले आपको सभी नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट. जैसे मैं इसको लिख देता हूँ पहले. सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए डिजिट्स क्या होते हैं. डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स एग्जिस्ट? देयर आर ओनली 10 डिजिट्स, ओनली 10 digits. And what are those digits? That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है स्टूडेंट? जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में केवल देयर आर ओनली 26 लेटर्स, इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर केवल 10 डिजिट्स होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और यही 10 डिजिट्स नंबर्स को बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर हो. राइट. तो देयर आर ओनली 10 डिजिट्स एग्जिस्ट. उसके बाद आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा. दैट इज 1, 2, 3, यानी काउंटिंग नंबर कह सकते हैं. यू कैन से काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर्स. राइट. After that, what is whole numbers? Whole numbers means 0, 1, 2, 3, 4, and so on. That is natural number plus 0. Form a set of whole numbers, right? After that, integers. Okay, student. After that, integers. हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जो इंटीजर्स होते हैं, there are 3 types of integers, right? That is positive integers, that start from 1, 2, 3, 4, and so on. Then negative integers, right? Negative integers क्या होते हैं स्टूडेंट? That is -1, -2, -3, and so on. Then third types of integer is neutral, right? And there is only one neutral integer, that is 0. Okay, so these are the 3 types of integers, right? उसके बाद स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं. You must know what is rational number. क्या होते हैं rational numbers? Which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers, but
denominator could not be 0, right? Q cannot be 0. Okay, so these are rational numbers. And the numbers which cannot be written in the form of P by Q, these are called irrational numbers. Okay. तो नंबर सिस्टम्स करने से सेट थ्योरी करने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? इसी तरह जो भी रियल नंबर्स होते हैं, एक मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूँ स्टूडेंट। जो रियल नंबर्स होते हैं, these are two types, that is rational numbers and irrational numbers, right? After that, then rational numbers can be terminating decimal or non-terminating decimal. Non-terminating decimal. Okay. Okay. Now, terminating decimal can be terminating decimal can be okay. One more thing. Okay, before writing this, okay. Yes, before writing this, I can classify these rational numbers also. That is integers and non-integers. Okay. What is integers? You know very well. Integers are, that is -1, -2, -3, and so on. Then whole numbers. Okay. You can say negative integers and whole numbers. And whole numbers can be divided into two groups, that is 0 and natural number. Okay. इस तरह से ठीक है। उसके बाद जो नॉन इंटीजर्स में आ जाएगा स्टूडेंट, नॉन इंटीजर्स में आ जाएगा आपके स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल, and non-terminating decimal. Okay, student. So you must know these. That is all about number system. Okay, got it? What are irrational numbers? Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of P by Q. These are usually non-terminating and non-repeating numbers. Okay. For example, pi. Okay. That is √3, √7. अगर आप √3 का रूट निकालना शुरू करोगे तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट अगर आपको सेट थ्योरी पढ़ना है तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सेट बनाना पड़ जाए पॉजिटिव इंटीजर्स का, रियल नंबर्स का, फिर रैशनल नंबर्स का, तभी बना पाओगे जब आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा। ठीक है स्टूडेंट।
किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ये आपका बन गया नंबर सिस्टम का चार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस मस्ट बी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट? हम कर रहे थे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या था? हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि थर्ड क्वेश्चन, राइट, डिजिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? ठीक है, तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट यू हैव टू फॉर्म अ टू डिजिट नेचुरल नंबर whose sum is 8, ये तो कर दिया था शायद। यस, डी पार्ट, डी पार्ट। तो हमने एक ऐसा सेट बनाना है जो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, एंड विच इज डिवाइजेड बाय डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को कंप्लीट डिवाइड करे, राइट? तो प्राइम नंबर, यू नो, प्राइम नंबर, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. But you know, 7 doesn't divide the number 60. 11 also doesn't divide the 60. 13 is also not divide the number 60, right? So these 7, 11, 13 are not the divisor of 60. So what are the other divisors which must be, which also we prime number are? That is 2, 3, 5. I don't think any other number. Okay, so these are the only three prime numbers which is also the divisor of 60. So we can write D equal to 2, 3, and 5. Okay, students. Now, E part. The set of all letters in the word trigonometry. तो E में आप देखेंगे आप the set of letters. तो इसमें आपने सिर्फ letters लिखने हैं और roster form में लिखने हैं. तो you have to write each of the letters that from the word trigonometry, but repetition of that letter is not required here. Okay, G, then O, then N. Okay, then again O, but we can't write O two times, right? We can't repeat the letters, right? Then M, then E, then T is there, but we have already written the T. Then R is also written by me already. Then Y. Okay, so these are the set of the letters that from the word trigonometry, right? Next part, that is sixth part. The set of all letters in the word better. Again, let the name of the set is F, that is B, E, T, and then R. Okay, each of the letter must be written only once. Okay, so this is the way of writing the set in roster form. Now, question number 4th. Okay, question number 4. I will do only one part, and rest of the part you have to do yourself, right? Question 4th, first part. It is given, let the name of the set is A, and it is given in the roster form, that is 3, 6, 9, 12, right? तो अगर मुझे इस सेट को सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है, इनकी मुझे कॉमन प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, बिना दिमाग के तो कुछ होता नहीं स्टूडेंट. तो पहले सोचो कि ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो इन सभी मेंबर्स में अप्लाई होती है.
क्या आपको मिला? You can see that each of the numbers are the multiple of 3. So we get a property, we get a common property. So we write x represents the members of this set, right? And now write the property of that that belongs to that set, right? The property is that x is a multiple of 3, where m equal to 1, 2, 3, and 4. Okay? So we can write this way. So this is I have written in the form of set builder form. Or you can also write x such that x equal to 3m. M is a natural numbers. M is a natural number less than 5. Okay. So in set builder form, there are many ways to write the same set. Okay, student. Similarly, the second part of the fourth question. See, this is 2, this is 4, this is 8, this is 16, this is 30, right? Now, you have to think about the common property of these numbers, right? Okay, let the name of the set is B, or let x such that x equal to, you can write x equal to 2 raised to power 1, 2, 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8, 2 raised to power 4 is 16, 2 raised to power 5 is 32. So we can write 2 raised to power n here, where n equal to natural number less than 6. ठीक है स्टूडेंट? इस तरह से, तो इस तरह से आपको सोचना होगा स्टूडेंट किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, राइट? सो आपने देखा कि अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर रोस्टर फॉर्म लिखा है तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को बदलने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी है, राइट स्टूडेंट? नाउ rest of the question you have to do yourself, right? You have to try it yourself, and in the next lecture I will discuss this question with you. Okay, तो मुझे आज्ञा दीजिए. Thank you very much. See you in the next class.